गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबका स्वागत है। वणक्कम, सत श्री अकाल। आज हम देखेंगे चाइना's perceptions ऑन द एलएसी स्टैंड ऑफ। चाइना का क्या रुख है एलएसी के स्टैंड ऑफ के ऊपर, और ये बात, इस चीज के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ दोबारा और मेरे पुराने गुरु ब्रिगेडियर अरुण सहगल साहब हैं। सर, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द शो। Thank you, sir. Thank you. Always an honor. Sure. Thanks a lot, sir. I'll just give a small background and then Okay. we can go back into the subject, right? Yeah, sure. कि सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये पिछले हफ्ता हमने चाइना चैलेंज नंबर 8 था, उसमें हमने देखा था, हम दोनों ने डिस्कस किया था चाइना's इंडिया परसेप्शंस एंड कंपल्शन, कि चाइना का क्या इम्पोर्टेंस है इंडिया के बारे में और क्या रुख है इंडिया के बारे में, और उनका क्या कंपल्शन है जिस तरीके से हमारे साथ डील करते हैं। ये आज का जो बातचीत है अबाउट द एलएसी इज एन एक्सटेंशन जो हमने इस प्रोग्राम में हमने जो बात किया था, राइट? ये कोई अलग नहीं है, ये कोई नया नहीं है, तो ये एक सीरीज है जो हम करेंगे, राइट? नेक्स्ट, सबसे पहले एक मोटे तौर पर बताना चाहता हूं, चाइना क्यों तिब्बत को पकड़ रहा है। चाइना तिब्बत को इसीलिए पकड़ के बैठा है क्योंकि जो तिब्बतन प्लेटो है, ये दुनिया के या एशिया के जितने बड़े बड़े नदियां हैं, इंडस, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, साल्वीन, मेकोंग, यांगजी और येलो रिवर या हुआंगो, ये सारे जो बड़े बड़े नदियां हैं एशिया के, ये तिब्बतन प्लेटो से उतरते हैं। और चाइना जो है इज अ वाटर डेफिशिएंट नेशन। पानी का किल्लत है चाइना में, हर चीज के लिए किल्लत है, और जैसे जैसे वो इंडस्ट्रियल बन के आगे बढ़ता गया है, उनको पानी का और कमी होता आ रहा है, और वो पानी यहाँ से और लेना चाहते हैं। हम सबको पता है ब्रह्मपुत्र से वो पानी चुरा रहे हैं, और चुराने के चक्कर में, जिसके बारे में 4 दिन पहले मैंने वो प्रोग्राम किया था, राइट? उसके अलावा 2-4 पॉइंट जो पिछले बार भी मैंने बताया, दोबारा बता रहा हूं। इंडिया एंड चाइना हैव ग्रेट पावर एम्बिशंस। दोनों बड़े दुनिया के ग्रेट पावर बनना चाहते हैं। जिस तरीके से इंडिया बदल रहा है, चाइना भी बदल रहा है, पर इंडिया का जो राइज है इज एट चाइनाज एक्सपेंस। जब तक चाइना नहीं घटेगा, इंडिया उभर के नहीं आएगा। और हमारे जो टेंशन है चाइना और इंडिया का, ये बाउंड्री के पार है, बहुत है। अगले 25 साल आर इंपॉर्टेंट फॉर बोथ इंडिया एंड चाइना टू अचीव देयर गोल्स। 2049 चाइना बोलता है कि वो सुपर पावर बनना चाहिए अगले 25-26 साल में। हमारा अमृतकाल, हमारा प्रधानमंत्री ने बोला 2047, जब हमारा 100 साल हो जाएगा हमारा देश। हमारा इतिहास में, दुनिया के इतिहास में ऐसे कोई टाइम नहीं हुआ जब दो पावर साथ साथ, जिसके कॉमन बॉर्डर और किनके कॉमन टेंशन हैं, वो साथ साथ राइज कर रहे हैं। और चाइना वांट्स टू बी द अनडिस्प्यूटेड रीजनल पावर, राइट? एक चाइना का व्यू है इंडिया के बारे में मोटा। चाइना कोऑपरेशन अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ फोर्स इज लॉन्ग लास्टिंग, व्हाइल दैट थ्रू कॉम्प्रोमाइजेस फ्रेजाइल एंड शॉर्ट टर्म। वो सोचते हैं कि अगर हमसे बातचीत करेंगे तो वो जो उसका परिणाम बहुत कम हद के लिए होगा, पर अगर हमारे साथ फोर्स करके हमें दबाएंगे तो लंबा हद तक उनको कोऑपरेशन मिलेगा, जिस तरीके से 1962 के बाद मिला था, राइट? ये एक व्यू है। उसका परिणाम भी, इसके विपरीत व्यूज भी हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। पर ये व्यू इसीलिए मैंने किया क्योंकि जब से जी जिनपिंग आए हैं सत्ता में, इनका व्यू है ये, राइट? लास्ट टाइम सर, अगर आपको याद है, ये 3 स्कूल ऑफ चाइनीज थॉट आपने और हमने डिस्कस किया। 2 मिनट आप इसके ऊपर व्यतीत करें और उसके बाद
जो आपका पार्ट 2 का स्लाइड है वो दिखाऊंगा मैं। Should I start? यस सर। Okay. Thank you very much. Uh, Last time जब हमने बातचीत करी थी, we had talked about the Chinese perception about India. I had said that there are three schools. One is a hyper nationalist school जो चाहता है कि हिंदुस्तान को सबक सिखाना चाहिए, और जैसे कि जनरल साहब ने बोला कि दो कंट्री जो नेबर हैं एक साथ राइज नहीं कर सकते, एंड दे प्रूव अ चैलेंज टू ईच अदर. So in that context, China is not willing to accept a simultaneous rise of India. But there is a second school. वो कहता है if China wants to work in the main strategic direction, and the main strategic direction is the global challenge being posed to China's rise and Chinese economic development and its economic growth, is by United States and the Western powers. So it needs to solve the problem in the secondary direction. वो कहता है कि हमारे को जो इंडिया के साथ है बेसिकली, वी शुड सॉर्ट आउट प्रॉब्लम. अदरवाइज अगर ये हमने ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करी तो आगे जाके हमें दो फ्रंट का चैलेंज मिलेगा. विल बी फेस विद अ टू फ्रंट चैलेंज. थर्ड इज अ रैशनल स्कूल. वो कहता है कि दोनों देश हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बोथ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, एंड बेस्ट स्ट्रेटजी है कि हम अपना टाइम गुजारें while continuously maintaining pressure and seeking bilateral cooperation with India. और अगर आप देखेंगे कि अभी जब क्विन गॉन्ग साहब आए थे, पाकिस्तान चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, उनका यही कह रहा है कि सब कुछ स्टेबिलिटी है, बाउंड्री लेवल स्टेबल है, सब कुछ है, हमें आगे अपने जो है बायलैटरल रिलेशन पे आगे बढ़ना चाहिए. ये अगर बैकड्रॉप लेके चले तो हमारे को समझ में जो चाइनीज स्ट्रेटजी है वो है, इन शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म, China will persist with multi-domain threat as a policy of Indian containment. अगर हम ये तीन स्कूल को एक पूरा इनका जुज बनाए और इनका पूरा इनको समझें तो policy of India containment will continue to persist. This is something we need to accept, which basically means the military build-up and pressure along the LAC, along with posturing and intrusions, will continue. The idea of the Chinese political leadership is to impose military and political costs, forcing political accommodation on favorable terms, and under this strategy, there will be no early disengagement. साथ ही साथ इस स्ट्रेटेजी का जो दूसरा पल्लू है वो है continuous build up in the Indian Ocean to create a two front scenario for India, and in that China will also likely to extend its anti-excess and air strategy in the selective pockets of IR as a part of a further coercion of India. Thank you. Next. So in this today's episode, what we are going to discuss is that we have to understand that this standoff is now over 3 years old. क्या चाइना जो है ये स्टैंड ऑफ को अगले 2 3 4 और 4 साल तक बढ़ाना चाहेगा, या वो चाहता है कि मैं जो है वापस जो है स्टेटस को एंटे में चले जाऊं और मैं जो है अब भारत के साथ सुलह कर लूं. तो दो बेसिक प्रोपोजिशन है चाइना के पास. फर्स्ट प्रोपोजिशन इज मेंटेन स्टेटस को, एंड मेंटेनिंग स्टेटस को के उसके पास चंद एक कारण है वो जो समझता है. सबसे बड़ा वो परसेप्शन उसका ये है कि मैंने जो 7 नवंबर 1959 की जो LAC लाइन है वो मैंने उसको तकरीबन उसको वापस कब्जा कर लिया है और मैंने एक तरह से एक बफर जोन बना लिया है. Second issue is that he is greatly concerned by India's forward posture.
जब हम चीन के बारे में बात करते हैं, सैडली ये है कि हम जो है सिर्फ चीन के बारे में ही बात करते हैं। हम अपना फॉरवर्ड पोस्चर कहाँ आ गया है, उसका क्या पर्सपेक्टिव है, उसके बारे में हम बात नहीं इतना करते। परंतु चीन समझता है कि इंडिया का फॉरवर्ड पोस्चर इज बिकमिंग डेंजरसली क्लोज टू हिज Tibetan heartland, where after you cross the last ridge, you are entering into the valley area from where India can impose high costs on China, including territorial capture. Then third issue is that he believes that as long as he is holding Dapsang Valley, he is in a strategically tactically advantageous position. एंड बिकॉज देपसंग वैली एज यू ऑल नो, हम सब जानते हैं, वो एक सैंडविच है, सियाचिन ग्लेशियर एक तरफ, अक्साई चीन दूसरी तरफ, और उस तरह वहाँ से हमारा जो है जो कार्यक्रम पास का भी नज़दीक है, वो भी रास्ता जाता है। तो देपसंग वैली इज बिकमिंग सॉर्ट ऑफ अ पिवट which is becoming a strategically important landmark for the Chinese. So चाइना बिलीव करता है कि मैं स्टेटस को जो है वो मेंटेन कर सकता हूं, परंतु मेरी असेसमेंट के बारे में मेंटेनिंग स्टेटस को इज फ्रॉट विद बोथ ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक consequences and dangers. First fundamental point is that जो अभी जो 3 साल का स्टैंड ऑफ है, जितना मर्जी चाइनीज फॉरवर्ड पोस्चर ले ले, जितना मर्जी वो डेवलपमेंट कर ले फॉरवर्ड पोजीशंस की, इट इज imposing strategic costs, economic costs, and high degree of tension amongst the PLA troops. Number two, Chinese, at least the PLA leadership is aware that if push comes to shove, and if China raises uh, escalation, India will respond. Now, the problem for the Chinese is what manner escalation, कंट्रोलेबल है कि नहीं है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, और क्या इंडिया का रिस्पांस होगा, क्या मैं इस चीज को मैनेज कंट्रोल कर सकता हूं कि नहीं। यूक्रेन वॉर ने एक चीज बताई है, इनिशिएटिंग हॉस्टिलिटीज इज द सिंपलेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, मैनेजिंग operations and managing operational and tactical objectives, achieving operational and tactical objectives is not so easy, particularly when you are not fully aware of the friction of war. So this is something which is worries the Chinese. The third issue which the Chinese are consider when they look at this option, they also consider what is the role of India's quadrilateral partners, particularly the United States, in this conflict. They are conscious of the fact that India does get geointelligence from the Americans, but they also are seeing the manner in which a certain degree of support is being provided to Ukraine, and Ukraine is being strengthened against Russia. Whether India gets that aid, whether India wants support from China, America, whether it wants the American foots of troops on the ground, etc., are secondary issues. But when the PLA leadership sits down to calculate, they calculate a certain degree of role of United States, and they also calculate what are the implications. So can I put across a point which we could yeah, sure. I think you made, आपने जो बोला है वो बहुत कोजेंट पॉइंट्स बोला है, पर एक चीज जो आपने इंपॉर्टेंट किया कि इसका परिणाम क्या होगा। एंटरिंग इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट और एस्केलेटिंग अ सिचुएशन एक बात है, पर उससे एग्जिट करना दूसरी बात है। और एग्जिट तभी होता है जब एलएसी के ऊपर चाइना का पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हासिल हो जाए। तो मेरा एक सवाल हर वक्त ये था कि जब चाइना ने तकरीबन उसका 1959 का जो पोस्चर है ऑलमोस्ट पा लिया है,
जैसे आपने बताया दिप्सांग पाने के बाद, उसका क्या पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होगा इधर पकड़ के ये एस्केलेट करने के लिए, एक्सेप्ट, और उसको ये भी पता है कि अरुणाचल में एक आध पास के अलावा या एक आध पोस्ट के अलावा और कुछ नहीं पकड़ सकता। सी आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया। मई 2020 से पहले, 2020 से पहले आप देखें उसका पोस्टर क्या होता था। उसके बॉर्डर गार्ड्स जो होते थे, वो सामने होते प्लीज थे। अंडरस्टैंड, हिज बॉर्डर गार्ड्स यूज्ड टू मैन द LAC. He was nowhere near the LAC. He was sitting behind and he used to come, patrol, and go back. And I used to make a joke that is, when India goes and does patrolling with the manpower, he does patrolling with his cameras. So now what has changed? What has changed is that he has to maintain 50, 60,000 troops in situ, backed up with a huge amount of forward deployment of air power, forward deployment of resources. As we are all aware, particularly us who have been in uniform, maintaining logistically a division in the mountains is so expensive. यस। So there, please, there is this, I would say, a very wrong notion among people that it's only India who's feeling the cost of these deployments. No, Chinese are paying a huge cost. They're paying a So, huge so cost. so what I'm trying to say is this. So the problem for him is, क्या वो 3-4 और बैठा रहेगा? तो हमारा क्या जवाब है? अब बैठे रहो। हाँ, यस। तो यू आर एक्चुअली जो मैं बात आपसे जो आपने बोला है वो, और मैं सबको My बताना last चाहता point, I हूँ। just listen. My point is, अगर 3 साल, please understand the second issue. वो बाद में आनी थी, मैं अभी बता देता हूँ। वो second issue ये है कि as the time passes, there is an incremental improvement in India's military capabilities. अभी शो शुरू होने से पहले आपने बोला that आप एक जो है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स कर रहे हो जो आर्टिलरी के लिए है, और हमारी आर्टिलरी फोर्सेस जो है, अभी हमने साथ में साथ हम मिसाइल फोर्सेस करें, वी आर डेवलपिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रेडिबल मिलिट्री कैपेबिलिटी which will come into play in next 2 to 3 years. Yes, So yes. the cost of escalation will exponentially increase for the Chinese as he sits along on these borders. Sorry, now you have a question. या नो सर, दैट्स द पॉइंट जो आप बात बोल रहे थे, मैं सबको बताना चाहता हूँ। हम सब सोचते हैं कि इंडियन आर्मी का जो कमिटमेंट है LAC के ऊपर, उससे क्या है, हमारे ऊपर दबाव है, हम पैसा खर्च कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ये अभी जो पिछले 3-4 मिनट में जो ब्रिगेडियर साइगल साहब ने बताया, उसका खास बात यह है कि जब हम वहां बैठे हैं और हमारा कम्युनिकेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, हमारा कैपेसिटीज इंप्रूव हो रहे हैं, तो चाइना के ऊपर महंगा पड़ रहा है, उनका कमिटमेंट इंक्रीज हो रहा है, और उनको ये नहीं पता अभी कि हमारे साथ करें क्या, क्योंकि जैसे दिन बढ़ता जाएगा हमारा जो शक्ति है वो तकरीबन एक पार हो जाएगा, समतल हो जाएगा, ठीक, क्योंकि उस इलाके में ऐसे कोई ये नहीं है जहां आप एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल हावी हो सकते हो, और सिर्फ इक्विपमेंट के ऊपर, राइट। तो जिस LAC के ऊपर 50 या 60 हजार प्योर उनके 1-2 डिवीजन को मेंटेन करने के लिए उसके पीछे 6 गुना या 10 गुना लॉजिस्टिक्स चाहिए, क्योंकि उसके जो लॉजिस्टिक्स है 6000 किलोमीटर के दूर आना है यहाँ तक। वो बीजिंग से यहाँ का रास्ता 6000 किलोमीटर है। तो मेन पॉइंट जो ये निकल आ रहा है कि चाइना इज पेइंग अ ह्यूज कॉस्ट टू मेंटेन इट्स प्रेजेंस ऑन द LAC, और ये जो कॉस्ट ये पे कर रहे हैं, इट इज एट द एक्सपेंस ऑफ द कॉस्ट विच दे वुड हैव हैड
or the capacity they would have had to use this force against some other place. So this is the point I wanted to make, sir. Thank you. Yeah, absolutely correct, sir. I totally agree with you. But my next point is there is a perception that there is a huge force asymmetry and economic asymmetry. What I like to point out here is that given the present combat ratio, there is not a walkover for China. There is a very little differential in deployed power potential. I repeat my word, very little difference in the deployed power potential. Now, if we can interdict or stop a Chinese buildup, which any escalation would allow us to do it, we will be able to stall those movements and impose heavy costs. Second thing, we the PLA is as you are all aware that there it's not a permanent force. They go through what's it called Yeah, heavy rotation, sir. uh, and therefore, while we are our troops, poor guys who are there, they are on this fifth or sixth tenure in the mountains. They are hardy. They understand the mountains, and they know how to operate in those mountains. Please try and understand that why is it that the Chinese are now thinking of hiring Tibetans in the PLA? They are thinking of hiring the Tibetans in the PLA primarily because they have found there is a certain amount of weaknesses amongst the PLA forces. I would suggest that people who question these should do some research in Chinese literature and in Chinese uh, what is called think Journals. tanks. You will realize that there is a huge degree of problem which they are facing. The turnovers are high, and they, Conscriptions. they cannot maintain that level of therefore, what is the Chinese doctrine? Chinese doctrine is of firepower. What is that capacity of that firepower in the mountains? We are all aware. We are all aware. Mountain, how many, what is the accuracy of firepower? The third issue is that the numerical superiority of the PLA, Indian Air Force versus the plan. This is an important issue, particularly in the use of tactical air power is concerned. And India has advantage of forward bases, topography, weather, and all weather IAF forces. There are some people who talk about the fact that the Chinese have a missile force. The calculations have indicated that it will take close to about 200 plus missiles to keep one airfield shut for 24 hours. And as per estimations, the Chinese do not have more than 1,200 or maximum 2,000 missiles in the area. They are not going to waste their missiles in keeping air forces down. And particularly, if we get the kind of equipment that we are trying to now get, of advanced intelligence and uh, and the kind of drone coverage and the kind of UCAVs we are trying to get, we will be able to deal with the Chinese air power. Also, please remember, there is no cover in Tibet. Tibet is sans cover. There is no cover. So, if we get a long range weapon systems, we can take out their airfields and take out the infrastructure of the airfields. So, for us, a limited damage of a high altitude airfield is of much more consequences to the Chinese than a similar kind of a damage to our airfield, particularly in the context that we are operating from lower altitudes. So this is something which we need to understand. The second issue, which is also bothers the PLA's high command, is that
What is the nature of Indo-US partnership? One of the key elements which the Chinese keep repeating all the time, particularly in the think tank discourses and also number of other places where you meet and then and you interact with the Chinese, is that they are uncomfortable with growing alliance between India and United States. There, as I also mentioned, that in our of their three perceptions, this is something which is bothering them quite a lot. They cannot allow India to emerge as a counterweight to China in the Indo-Pacific and create a second front. Now, if they continue to push us the way they are, then it's automatic that India will enhance its at least its military capability and military cooperation and try and obtain defense technologies. The latest of which is maybe we'll get 414 aero engines if finally it comes through, or at least we are going to get MQ9 Reapers during this Prime Minister on visit. So certainly upgrading our capability and capacity, because India does not take anything for free like others. We pay for our whatever we get. So we will it will be a commercial deal and a technologically advanced deal, and that's it. So the Chinese issue, basically, problem is this: that how do we handle this growing partnership of this thing and India's emergence as an important strategic player in Asia? This is a big problem. Can Next issue we is. can I Oh, yeah, can we sure, sure. yeah. Sorry. नहीं नहीं Okay. सर, नो 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 प्रॉब्लम सर। जो मैं बताना चाहता हूँ तो आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो अभी जो दो आपने बताया एसिमेट्री के बारे में, उनका लॉजिस्टिक्स कैपेबिलिटी के बारे में आपने बात किया। आपने ये भी बताया कि अगर चाइना को हमारे ऊपर हावी होना है तो उसको ही हैज टू एक्सपेंड अ लॉट मोर ऑफ हिज कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, और हिमालयस के ऊपर एक सीमित जगह है जिसके उसके ऊपर जितना भी अगर आप जोर डालो तो आपको परिणाम नहीं मिलेगा। और उसका जो इनएक्सपीरियंस के तहत वो फायर पावर के ऊपर निर्भर है, और उसके पास उतने ही मिसाइल है जितने वो इस्तेमाल कर सकता है। वो जितना उसके पास मिसाइल है वो यहाँ नहीं टोक सकता है। और उसके बाद आपने बोला कि चाइना इज वरिड कि हमारा जो बहुत परेशान है कि वो हम यूएसए के साथ जुड़ गए और हमारा कैपेबिलिटीज बढ़ रहे हैं। अगर इस सब का निचोड़ अब हम करें तो एक सवाल है मेरा जो आपसे पूछूंगा और उसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या वो टाइम आ गया कि हमारा जो सोच है एलएसी के बारे में वो बदलना चाहिए। वो इस प्रकार है, हम सब सोचते हैं कि भाई इंडिया शुड नॉट concentrate too much on the LAC और मैरिटाइम डोमेन के ऊपर कंसंट्रेट और एक्सपैंड करना चाहिए। और हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारा सोच यह है कि वी आर कंसंट्रेटिंग टू मच ऑन द LAC। जो आप बोल रहे हो उससे ये नहीं जाहिर होता कि वी आर ऑलरेडी स्ट्रांग ऑन द LAC एंड we have reached that stage where we can now concentrate more on the maritime domain। जो हमारा LAC के ऊपर है, जो हमारा प्लान्स में है और जो पाइपलाइन में है, उसे हम चाइना को निपट सकते हैं, रोक सकते हैं। और चाइना के पास वो ताकत नहीं है कि हमें ओवर पावर करें, और हमारे पास नेशनल रिजर्व्स इतने हैं, राइट, वी कैन हैंडल देम। एंड नाउ वी शुड एज अ रिजल्ट concentrate more on the maritime and the air domain and probably in the space domain। ओके, सो जो आपने कहा मैं आपसे बिल्कुल 100% सहमत हूँ। एक डेढ़ साल पहले हमने एक पेपर लिखा था जिसके ऊपर हमने कहा था कि टाइम हैज कम when India need not follow the policy of forward deployment and, like I say, policing the line of control. We need to
use sensors and technology to maintain a certain degree of surveillance and back it up by rapid reaction forces or the IBGs that, which we are now talking about, a mountain IBGs, with the capacity of at least moving certain level of forces. I will not go into the forces. You can take company Yeah, level at that's one okay. time, That's color minor. level, minor. But at least and follow this up with a long range precision strike capability, which, as General Shankar, who has been the DG artillery, will explain, is that we are slowly getting it and we have already got it. So if you have a 40 to 50 kilometer range precision strike capability, you need not worry so much about physical control or thing. So the policing of LAC has to change. So the construct basically is this: we have to shift from attritional oriented thinking to a smart deployment with thinking to occupy and undertake operations for selected objectives which give us an overall strategic or a tactical advantage. This is something which we need to do. Now, if we do that, we can certainly bring about a huge level of reduction in our capabilities, particularly in our manpower oriented force structures of our divisions and corps. As far as correlation with the maritime is concerned, yes, the logic of strengthening our maritime base and our maritime capabilities is this, that as we speak, we are a 3.7 or $3.8 trillion economy. Very soon, in next 2, 3, 4 years, will be 5 trillion and then could jumping to $7, $8 trillion economy if we continue to grow. Now, if we are that strong an economy, the flows of trade is 90% by sea. We are also an energy deficient country. Although we are trying to develop alternative means of energy, but the issue is that we are an energy deficient country. So we need to control the sea lines of communication. And here, there are far too many things that are happening. There are far too many things that are happening, particularly the Chinese inroads, the new alliance between China, Russia, and Iran, then the Chinese moves into West Asia, and Chinese bases in the east coast of Africa. So we need to shift our orientation. And it's a very interesting thinking is that in the latest quadrilateral statement that has been issued after the meeting in Hiroshima, for the first time, IORA has been added. Yes. IORA has been added. Indian Ocean Rim. Indian Yeah, Ocean Rim Association Association. has Yeah. been added as one of the central points of contact between along with AIOP, the ASEAN Outlook on Indo-Pacific, as well as the Pacific Forum. This is being done primarily because there is a realization that the Indian Ocean has not been given the kind of detailed uh, look as it requires, and it's been neglected. So that's why when we are going in for our maritime capability in development, it's an important requirement to ensure that our growth and our trade is not interrelated or affected by inimical players. Yeah. Thank That's you, the sir. important. Okay. Now my next point is the I talked about earlier that the India is a secondary theater for China. The dilemma for the Chinese is this: if they expend too much of effort, energy, etc., and there are not commensurate gains in terms of a strategic gains, please understand, occupying another 2 kilometers of territory in India, apart from the fact that it hurts us nationally, is हमारे इज्जत को impact करती है, but in terms of strategic gains, it is nothing.
But the loss of, as a result of kinetic friction, which the Chinese will face as a result, and which has no strategic advantage, would be much higher. So the problem with the Chinese basically is this: should we expend resources, money, and capacities on a secondary theater, or should we concentrate on the primary Primary theater theater. where the threat is increasing by the day? It's a choice. And I like to ask people who continue to contradict and say we are facing this, we are facing that, etc., etc. Ask them as to, if they were in the Chinese shoes, what would be their reaction? Can I answer that, sir? Yes, sir. What कि चाइना क्या सोचता है, उसका प्राइमरी फ्रंट कौन सा है और सेकेंडरी फ्रंट कौन सा है, ये चाइना क्या सोचता है? सर, आई मीन इट, आई विल नॉट से आंसर, ये मैं चाइनीज का लिखा हुआ व्याख्या से मैं आपको बता रहा हूँ। आजकल चाइना में ये सोच है, दे आर फेसिंग 4 फ्रंट, 4 फ्रंट वो फेस कर रहे हैं। एक पहला फ्रंट है द कोरियन फ्रंट और द कोरियन पेनिनसुला फ्रंट, वेयर दे एक्सपेक्ट टू फेस द साउथ कोरियन एंड अमेरिकन फोर्सेस, राइट? एंड वो जो थ्रेट है, दे एनविसाज इट टू कम मेनली थ्रू नॉर्थ कोरिया एंड क्लोजर टू द होमलैंड थ्रू अलोंग द यालू। वो डरते हैं यालू रिवर, अगर इफ कोरिया कल, नॉर्थ कोरिया कल के दिन गिर गया, और इफ नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया गेट टुगेदर, राइट, लाइक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इफ अमेरिकन कम एंड सिट ऑन यालू, द सेकेंड फ्रंट जो उनको उनको दिमाग खाता है, वो है ताइवान। और ताइवान में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ताइवान, अगर ताइवान में जाएंगे तो ताइवानी फोर्सेस ही नहीं है जो दिन ब दिन तगड़ा होता जा रहा है, बट दे विल हैव टू कॉन्फ्रंट जापानीज एंड द अमेरिकन फोर्सेस। उनका तीसरा फ्रंट है पैसिफिक, साउथ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक और बेसिकली पैसिफिक आइलैंड ग्रुप के इलाके Yeah. में। They are worried the third front will be with USA and and Australia. In Thank you addition, and for the the fourth emotional front, channel. yeah, and the fourth front जो है वो इंडिया के साथ along the LAC. इस 4 फ्रंट के अलावा they are also worried एक क्वाड जाके मलाक्का स्ट्रेट को बंद कर देगा। ये जो लेटेस्ट सोच विचार है, it actually goes beyond the threats which you are the paradigm which they, or the dilemma of the paradigm in which they are. Oh, This is the, agreed, agreed. so You see, I was only focusing on the LAC, but नहीं सर, but what you say is correct. क्योंकि since you had brought that up, I thought मैंने सोचा कि ये सबको बता दूं कि जब हम एलएसी के बारे में बात कर रहे हैं, चाइना का जो बड़ा दृश्य है कभी खोना नहीं चाहिए। ये हमारा एलएसी उनका बड़ा दृश्य में कहाँ फिट होता है, जो ब्रिगेडियर साहब बता रहे हैं, उसको कभी नजरअंदाज कर देंगे तो फिर चाइना एलएसी जो है ना बड़ा प्रॉब्लम होगा। अगर हम पूरा चाइना का प्रॉब्लम देखेंगे तो एलएसी का या हमारा एलएसी और उस प्रॉब्लम्स क्या है वो सही स्तर में आके बैठेंगे। दैट्स द ओनली पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक। Thank you. Very good point. And my last point on this issue is, taking cognizance of what we have discussed so far, it will not be a frivolous decision by the Chinese to escalate. So, Yes. if you notice, every time a Chinese leader comes to India, he talks about stability on the borders. He talks about this. He talks about that. I am willing to, now he's come up with a depth song. We give me a 20-kilometer corridor. Uh, uh, these are all Buffer zone. negotiating positions. Yes, sir. And we told him no, 2 to 3 kilometers maximum, like anywhere else. We are willing to accept. Let's do that. But 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 the question basically is this: is that he will pinprick, he will negotiate. But what I want to convey to everybody is this: is that he will not escalate for the sake of escalation. He will not initiate hostilities because he thinks and we think he's strong.
It will be a calibrated decision, which will be based on multiple factors, which I have tried to highlight so far, particularly in this option. So I'll stop here as far as this option is concerned, and I'll shift to the other option, and that is Please, sir. how, because I think I don't know what the time is. No, it's okay, sir. We can spend some time on it. Go ahead. Okay, now the next option is status quo ante. मैं आया, मैंने जो चाहा वो कर लिया, मैंने जो अपना बनाना कर दिया, मैं अभी पीछे हट जाता बैठे हूँ, रहूंगा. और and I will pull back. I'll pull back to an area which he will negotiate, and he'll say I have achieved my aim. So the problem here is basically is this: is he'll have to take two critical decisions. One will be a strategic decision, circumstances in which he decides to pull back to status quo ante. What will be his unique selling proposition to his own countrymen? What is he going to tell his countrymen? Why was I sitting for 4 years or 3 years? Sorry, my language. For 3 years on the LAC plus, and the way things are going, I think it's going to continue for one more winter. So, what have I achieved? What are my strategic gains vis-a-vis India? World will see India's GDP is growing. India's Atmanirbhar program and its capacity building is growing. India's economy is growing. India is becoming a more of a global strategic player, and India's relevance in both Southeast Asia and in South Asia is increasing. So what have I gained? What are my what are my advantages that I have been able to? Now the question that this thing is, the next issue we believes is, like we discussed those 3 points which the General Sahab had very rightly shown in the beginning, is that it will embolden India. India will say, what is India's position? India's position is very simple. We had agreements on the border. We had series of agreements on the border. You have flouted those agreements. Bring the border to status quo ante. And then we will start with the high representative talks and senior representative level talks, and we will resolve the boundary issue. So the problem now basically is this, that if he has to do that, then again the question comes is, politically, is it expedient for Xi Jinping? So what you are going to see as a result of all this is that there will be maneuvering taking place. Options will be thrown up, suggestions will be given, and they will come in the forthcoming two visits of President Xi Xi Jinping Jinping. here in July, and he's going to be here in September. And also, Russia will be leveraged to tell us to reach some kind of a compromise. So the important issue for us academics now, who are practicing academics, is this: is what ought to be acceptable compromises or acceptable solution to the situation that is happening, particularly if we believe that his starting a localized conflict or any escalation is not a viable option, or a not that effective an option. Then if he has to return to status quo ante, on what terms should he, and what was the minimum acceptable to India? So this, see, it is also now this whole issue of LSE and China standoff is linked to the higher political perspective of China. Objectives. If
if Xi Jinping is seen as weak, vacillating, or succumbing to India's or India stroke global pressures, then his positions will become this, and this will not only have impact on India, it will also have impact on this Taiwan option. So the question basically for the Chinese is that how do we handle this scenario? And please, uh, people who are listening to this broadcast, try and understand that there would be back channels, there would be pressures coming on us to some sort of agreement, some sort of arrangements. So, in our mind, we need to think through what is acceptable to us without getting गंगा हो about कि वो वहाँ बैठा हुआ है, वो पहाड़ी के ऊपर है, वो पीपी में नहीं जा सकता, मैं वहाँ नहीं जा सकता. What is our minimum acceptable solution beyond which are our red lines? So bottom line, what are India's red lines for resolution of this? We are also seeing that what happened in Doklam, he's trying to go back on it. We're seeing he's trying to make roads, and he's trying to build, create new settlements along the border, etc., etc. We have to take cognizance of that. Are we willing to sit down for another 2 to 3 years? We are okay. We are okay. We are developing. We are sitting here. We have formulated a reasonable amount of SOPs. We are providing adequate shelters. We are enhancing our comfort level of our troops. We are militarily getting strong. So the message to the Chinese is very simple. If you want a settlement, it has to be on mutually acceptable terms. A, which must recognize that the all the agreements that we had fought, we had agreements which we have acted upon are honored, and no unilateral actions or any sort by the Chinese. You and then we will discuss the possibilities of how to resolve this dispute. Until unless he does that, we are all pigs back. We should not worry about those. There are Yes, costs. sir. Of course, there are costs. There are no wonder there are costs. But over the period of time, we have amortized those costs here. And look what we are trying to do. Now we are building a railway line from Pathankot to Ladakh. We are building a new tunnel through Zojila Pass. We'll be able to maintain our troops much more, much better. I been a BM in Kargil in 1979. I know what the situation was. And I traveled for my 70th birthday to Ladakh. I traveled all over the place and spent my birthday with my regiment in Loma. What I'm trying to say is that we are getting better and better. We do not have to self deter ourselves. My message is very simple. Do not self deter ourselves. That doesn't mean we also have to be Ganga Ho. That doesn't mean that we have to unnecessarily pick up fights with the Chinese. The idea basically is this, that politically we have been told that there can be no resolution till such time China honors the agreement it has done. That's our bottom line. Right, sir. China has to come to that, and then we move forward. Thank you very much. सर, जो आपने एक बहुत अहम बात बोला है, ये पूरा अभी लास्ट हिस्से में, कि चाइना हर चीज जो है वो पॉलिटिकल नजरिया से देखता है, उसका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है. जब तक वो एलएसी के ऊपर बैठा रहे, उसके ऊपर पॉलिटिकल कॉस्ट आर माउंटिंग. क्या जी जिनपिंग को ये राजनीतिक तौर पे सही होगा कि हम वहां अपना स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएं, वो भी चुपचाप बैठे और इसका कोई परिणाम ना निकले और उसको कोई एडवांटेज भी ना मिले. लोग उससे पूछेंगे कि भाई आप क्यों इतने फौज को लेके जाके वहां बैठे हो, क्योंकि जो भी वहां का कुछ आप हासिल भी नहीं कर रहे हो और यहाँ ताइवान के साथ भी कुछ नहीं हो रहा है. तो धीरे 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 जैसे ये दिन बढ़ता जाएगा, एडवांटेज इंडिया हो जाएगा एलएसी के ऊपर. राइट. और हमें सतर्क होके हम अपना काम करना चाहिए. जो ऐसे पिन प्रिक होते रहेंगे यहाँ यांगजी में, जैसे मुक्का दक्की हुआ है, या डोकलाम में कोई वो विलेज बना देता है, या कोई लॉ पास कर देता है,
या वो चाइना के नाम को घोषित कर देगा, ऐसे छोटे मोटे चीज होते रहेंगे। पर बात यह है, हमें भी पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं इस लिहाजे में। जैसे हमने G20 का श्रीनगर में किया था, एक G20 का इवेंट हमने अरुणाचल में किया था, Yeah, yeah. और उसको बताया कि भाई हम भी हैं यहाँ, आप अकेले नहीं हो, राइट। ऐसे दो चार चीज हमने भी किया है। और यूएसए के साथ वो हिमाचल में हमने एक पूरा एक्सरसाइज भी किया था एलएसी के ऊपर, राइट। और उसके साथ साथ कलाईकोंडा एयरफोर्स बेस में यूएसए के आधुनिक जहाज भी आके उन्होंने एयर एक्सरसाइज किया। तो हम भी संकेत दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ जो चाइना का एडवांटेज है एलएसी के ऊपर, यही। और इन्होंने ये भी बताया किस तरीके से हमारा क्या रवैया होना चाहिए एलएसी के ऊपर, और नेशनल रवैया होने क्या होना चाहिए पूरा एलएसी के ऊपर और चाइना को हैंडल करने के लिए। सो इसके साथ आई विल टेक अ फ्यू क्वेश्चंस एंड देन विल ओके। The first question, sir, from Tushar Srivastav. How can India reduce the financial cost of military supply chain for soldiers on the LAC? Would using drones or using rail instead of trucks help? Okay, one by one, or should I take? No, Okay, you take so this one. okay, We'll take a few, sir. We'll not. Tushar, very good question. In fact, this is an ongoing process. We are improving our supply chains by building roads. Earlier, we used to hump our stuff through mules, etc. But we about 90% of our posts are now supplied by motor vehicles. Uh, we have already started experiments, and I think it is already going on that we have started using drones. uh, as I mentioned to you in my remarks, that we are building a tunnel in Zojila. If once Zojila tunnel is completed, we'll have a 24 by 7 connectivity. We already have a 24 by 7 connectivity through Atal tunnel in Manali, which connects to Ladakh, and we are already thinking, not thinking, we have already started work on railway line to Ladakh. So and this is not only in Ladakh, it is also happening in the eastern sector. So India has finally woken up to the fact we had a problem earlier. We were following a strategy of what we call scorched earth. We were thinking in our mind that if we do not do forward deployment, forward development, the Chinese will be not able to come too deep inside India. That strategy has changed over the last 15, 20 years. We have started to develop roads right up to the border and enhance our communications and ensure and develop logistic support bases. So so things are improving, and we are in a position today to sustain what we require in the areas of our threat and our areas of our operations uh, reasonably successfully. So the next question is: it true both nations are bearing? It's true both nations are bearing huge costs for maintaining troops at the LAC. However, I feel we must impose greater costs on China because this was a unilateral escalation. How to do that? I think the Brady has spelt it out quite adequately, right? The mere fact that आप develop कर रहे हो, or if you're just sitting there, you're imposing costs on him, whether you like it or not. And these costs with China are not only actual costs, they're also political costs. The political cost is the one which he explained in the end. If you could just repeat that issue of political cost a bit, because I think that is something which is most important as far as handling See, China is concerned. the basic point you have to understand is this: is that how long can China keep sitting over here, and what gains does it have to show to its people of this continued deployment over here? And even as it continues to build up forward deployments, habitats, logistics, etc., 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 please remember, like I was saying, that he was used to manage the line of actual control
through video cameras. Now he has to have a deployment. And please understand that every time you develop anything, you have to maintain it. And once you maintain it, there are huge costs. So the question being asked is that if in line of actual control remains as it is or with little differences, 2 kilometers this way, 3 kilometers there, after all, it's a rocky area. What are the strategic gains are where China is getting as a result of its 3 years plus deployment on the border? How much has it threatened? Can it threaten any of our important towns, villages, or important strategically important places, or what we call the VAs and VPs? It cannot, because that will mean war. That will mean escalation. And I just explained, escalation is something which we can, but he will not, because he has to understand the political consequences. The political consequences is how does he manage the escalation control? And please also remember, I did not want to say it, but I must say it, that we are a nuclear power. We have nuclear capabilities. And while we have a no first use doctrine, etc., 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 but any sensible nation also has what we call an intra-war deterrence. Intra-war deterrence basically means is this, that when push comes to shove, lose it or use it scenario comes into play. And if lose it and serious comes into play, then India, with its own long range capabilities and capacities, can ensure that escalation is controlled. So he understands all that. He's not a fool. He's not a fool. He understands that. But there are hot-headeds in PLA headquarters and the Western Theatre Command. Personally speaking, I thought the previous Western Theatre Command commander was a bit of a hot-headed fellow who thought that he can do whatever he feels like, and the Galwan Valley incident took place. And the fact that they suffered so many large casualties, they're still hiding behind the curtain of secrecy about the deaths that they have suffered. It's sad, but is that true? Right, sir. He's Rahul Rathod is only substantiating what you have said. The only answer to PRC aggression is India should somehow find ways to become a $10 trillion USD economy before 2030. If it happens, then it is not easy for PRC to geopolitically undermine us. Okay, let me. This is an interesting question. The latest world IMF figures have indicated that in Asia, China is number one, no doubt. Provides 31% of the global GDP. But then, which is the number two country in the world? India. 15% of global GDP is being provided by India. And this is going to increase. Chinese GDP is going to start, like the general rightly continues to say it and maintain it in his writing in other places, that China is sort of weakening economy. And I only today took out our China monitor, where the figures are that there's a $10 trillion debt which the Chinese owe to its enterprises and provinces. Now, that is the kind of debt they have to cover. So the question basically is this: that we are a growing economy, we will grow, and and there is today, we, by the dint of hard work, dint of our right decisions, dint of our own capacities and capabilities, we reach 3.5 trillion. We will reach 572 trillion by the 2030, and by certainly by about early 20 next decade, we will be a $10 trillion economy. I have no doubts on it. We have put in place all the elements of growth for this great nation. सर, जो भी आपने बोला है उसको मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ और थोड़ा विस्तार में बताना चाहता हूँ, खास करके हमारे इकोनॉमी के बारे में, इनफैक्ट चाइना के इकोनॉमी के बारे में, नॉट आर्स हमारा तो चल रहा है। जो इम्पोर्टेंट बात बोला है कि if China is contributing 31% to the world GDP, we are contributing 15%. 15% is not a small joke.
नेक्स्ट पॉइंट, पिछले 24 घंटे के अंदर मैंने दो आर्टिकल्स पढ़ा, एंड दैट टेल्स यू, वो दर्शाता है कि चाइना का इकोनॉमी कहाँ जा रहा है। मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। पहला आर्टिकल है वॉल स्ट्रीट जर्नल का, आज का, राइट, और May 30, 2023 एट 12:01 AM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। वो बोलता है, हेडिंग बोलता है, चाइना फेडेड रिकवरी रिवील्स डीपर इकोनॉमिक स्ट्रगल्स, राइट। और इसके बारे में क्या बोलता है, कंजम्पशन नहीं है, डेट बढ़ रहा है, जैसे सहगल साहब ने बताया, राइट, ओके। इसके साथ साथ साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में एक ओपिनियन पीस आया, वो बोलता है, वो और सख्त है, वो बोलता है कि चाइना इज फेसिंग 3 ग्रे राइनो सिचुएशंस, Yeah. राइट। I read both of them. Yes. हाँ, तो वो 3 ग्रे राइनो क्या है, एक डेट है, एक इनका आबादी या डेमोग्राफिक डिक्लाइन है, और एक डी रिस्किंग या डीकपलिंग है। और ये दो तीन चीज के बारे में पिछले 1 साल से मैं लिख रहा हूं, और वो सच होके आ रहा है। मेरे को कोई शक नहीं है चाइना का इकोनॉमी डूब रहा है, मैं स्पष्ट शब्दों में बताता हूं, राइट। आप देखिए, ये बात अगले साल हम बात करेंगे चाइना का इकोनॉमी कहाँ होगा। इस साल में चाइना का इकोनॉमी 4 से 5%, हो सकता है 6% भी बढ़ जाए, क्योंकि उनका एक रिबाउंड हो रहा है, पर उसके बाद इनका इकोनॉमी डूबेगा, राइट। इसके बारे में एक और आर्टिकल मैं लिख रहा हूँ, 2-3 दिन में उसको आउट करूंगा, शायद फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, यूरेशिया में, आई विल पुट इट बैक। सो आई थिंक वी हैव कम टू द एंड ऑफ, ओके, लेट मी सी सर, या sir, shed more light on the road in Tibet, which you said on Jaipur Dialogues is badly exposed to attack from us, is a weak link of China. So what I'd explain to them is that what actually says that entire road network is within 50 to 200 kilometers of the LAC, their main road, Eastern Express Highway and Western Express Highway. Yeah. मैंने बोला था कि अगर जिस दिन हमारे पास वो काबिलियत हो जाएगी थ्रू मिसाइल्स, थ्रू लॉन्ग रेंज प्रिसिशन वेक्टर्स, और सही तादाद में और सही कॉम्पोजिशन में, दैट वी कैन कंट्रोल मूवमेंट ऑन दिस रोड, वो तो मर गया। ये मैंने बोला था। तो इसके ऊपर आप थोड़ा आपके विचार बोलिए, क्योंकि आपने भी इसी के बारे में जिक्र किया, क्योंकि उसी के ऊपर, इसी रोड्स के ऊपर इसका एयरफील्ड भी निर्भर है, सब कुछ इसी के ऊपर चलता है, और कोई रोड है ही नहीं इसके पीछे। देखिए, मैंने चंद साल पहले एक आर्टिकल लिखा था, इंडियाज एंटी एरिया डिनायल कैपेबिलिटी। उसका साफ मुद्दा ये था कि इंडिया हैज टू डेवलप लॉन्ग रेंज वेक्टर, प्रिसिजन वेक्टर्स, to be able to impose costs on China before he can bring his forces and resources into the operational theaters. His railway lines are vulnerable. If you start putting he has to store petroleum products in large numbers in Tibet. He has to have forward bases of he have ammunition dumps. If you tactical and not tactical and operational strikes on his logistical means will cripple him. A. B. He has built a large number of roads with large number of bridges and important induction areas and important points which are vulnerable. So you have to target them. So the question basically is this: is if the other side understands you have the capacity to cause damage to him, which is a substantial damage, he will think twice before escalation. So the game is not to fight, the game is to put a fear in his mind
then escalation will be cost prohibitive, and the cost will be so high which will not be commensurate with the tactical gains that he will gain as a result of which his actions. That's it. Right, sir. I think there are a lot of questions, but I think we've run out of time. We'll, we've, आज हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस सुना। ये काफी फ्यूचरिस्टिक एनालिसिस है। ये जो एनालिसिस आज हमने सुना है, ये नॉर्मल तरीके से हमें कहीं नहीं मिलता। कोई नहीं बताता कि भाई चाइना का क्या प्रॉब्लम है एलएसी के ऊपर, कि चाइना का क्या कॉस्ट इनकर हो रहा है एलएसी के ऊपर, हम कैसे चाइना को अफेक्ट कर रहे हैं, इसके उनका क्या राजनीतिक नजरिया है इन चीजों के बारे में। ये सब एक नया नजरिया है। मैं बार बार यही बताता रहता हूं, जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि दुश्मन क्या करने वाला है, उसका क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या इश्यूज हैं, और जब तक हम उसके नजर से हम ये पूरा प्रॉब्लम को नहीं देखेंगे, तो हमारा जो रेस्पॉन्स है वो कभी सही नहीं होगा। और ये दो वीडियोस हमने किया, जो पिछले वीडियो जो हमने किया और ये दोनों वीडियो अगर आप साथ साथ देखोगे तो आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि चाइना क्या सोच रहा है एलएसी के ऊपर, वो क्या पाना चाहता है, और ये हमें थोड़ा गेस करना पड़ेगा कि उसका राजनीतिक मुद्दा क्या है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि चाइना के बारे में कि चाइना में हर चीज राजनीतिक होता है। वो राजनीतिक मुद्दा अगर पकड़ लेंगे और उसको अटैक करेंगे तो बाकी सब कुछ सही स्तर पे आ जाता है। राइट सर, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल एक्सपोजिशन यू गेव ऑन द Thank एलएसी, you, sir. एंड वी लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट थिंग। और मैं सबको बताना चाहता हूं कि अगला जो सीरीज हम सहगल साहब से के साथ हम शुरू करने वाले हैं, वो है एक अनोखा डायलॉग, जियो स्ट्रेटेजिक डायलॉग बिटवीन इंडिया, चाइना, यूएसए एंड रशिया का जो क्वाड्रिलेटरल इश्यूज है। क्योंकि ये जो चार बड़े बड़े देश उभर के आ रहे हैं, ये जिस तरीके से इनका इंटरप्ले होगा, उस तरीके से दुनिया का माहौल उभर के आएगा, और इसके बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। अगले हफ्ते से हम शुरू करेंगे। सो आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस, वी विल डिस्कस एंड देन Thank you very much, sir. Thank you. थैंक्स अ लॉट सर। I enjoyed being on your show. Same here, sir. Where I've always enjoyed you having you here, where I can think forward for a change. Otherwise, we keep thinking in the reverse gear. With this, मैं ये भी देख रहा हूँ कि बहुत सवाल आ रहे हैं। आप सॉरी, इतने ही हम सवाल ले सकते हैं एट अ टाइम, इससे ज्यादा देर हो जाएगा, राइट? सो और इसके लिए मैं एक ओपन डे रख रहा हूँ, जहां आप कोई भी सवाल पूछे, मैं आराम से आपको 1 या 2 घंटे, जब जितना टाइम हो, मैं टाइम स्पेंड करके आपको सवाल जवाब दूंगा। थैंक यू, गुड इवनिंग एंड Thank you. जय हिंद। जय हिंद सर।